बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोगों को समझ आ रही है वीडियो लेक्चर्स की और तंगी नहीं हो रही। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। मैं आप लोगों की सब क्यूरी सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो आज के लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर के ही कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये सारा लेक्चर आज प्रैक्टिकली है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब सब लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दें। ओके ओके, तो हमारा पहला प्रोजेक्ट के नाम से हमने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था। बिल्ड हो जाइए। हमारा ग्रेडल सिंक हो रहा है, तो लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश। ओके, तो आज हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। आज हम बनाएंगे अपनी फर्स्ट कैलकुलेटर एप्लीकेशन। सो सब लोग नया प्रोजेक्ट बनाएं। न्यू प्रोजेक्ट, लेट्स कॉल इट कैलकुलेटर। एंड नेक्स्ट बेसिक एक्टिविटी, नेक्स्ट। बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दें आप। ओके, इधर भी ग्रेडल बिल्ड होगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉरवर्ड द वीडियो। ओके, सो मेरा ग्रेडल बिल्ड हो गया है फॉर माय कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले लेट्स गो थ्रू द ड्रिल। हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हमने इसका लेआउट सेट करना है। सो हमें पता है कि हमारी ये मेन एक्टिविटी इज़ द क्लास, जिधर हमने सब काम करने होते हैं। उसके बाद हमारा इस मेन एक्टिविटी का हम ऑन क्रिएट में देख सकते हैं कि set content view. This is the view that is set for our main activity class, मतलब हमारा GUI graphic user interface, okay, which is r.layout.activity main. So हम अपने main से activity resources में से जाके layout में से हमें मिल जाएंगे अपने views for the main activity. So let's click on activity main, content main. Okay, activity main हमारा set है over here. So we're going to edit our activity main. First of all हम अपने layout को change करके relative layout में लेके जाएंगे। relative layout. Okay, let's go to the design. हमें नज़र आ रहा है कि हमारा view है वो changeable है। Now drag and drop is working, or hello world, that's in content main, इसको हम delete कर देते हैं। Okay, so हमने बनानी है एक कैलकुलेटर ऐप। So उसके लिए हम अपने विंडोज़ का कैलकुलेटर देख लेते हैं, हम उसकी मॉकअप बना लेते हैं। So let's go calculator. Okay, so हमने बनाना है कैलकुलेटर। हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे, वो मैं आपको शायद असाइनमेंट में दे दूँ।
सो हमने ये वाले बटन्स मैप करने हैं इधर, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू, ये बेसिक ऑपरेशंस हम रखते हैं अपने ऐप में। ओके, सो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट व्यू रखते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारी ऐप क्या है और क्या कर रही है। सो टेक्स्ट में रखते हैं कैलकुलेटर ऐप। ओके, हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट का साइज फ्रॉम हियर 18, कैलकुलेटर ऐप लिखा हुआ है मैंने, आई नो। oops, I accidentally pressed Control Z, so delete this। एक्टिविटी मेन में रहना है मुझे, इसको मैं बंद कर देता। ओके, कैलकुलेटर ऐप। ओके, इसका कलर हम कोई सेट करेंगे, एंड्रॉइड, लेट्स गो फॉर डार्क ब्लैक। ओके, लुक्स गुड। नेक्स्ट हम चंद बटन्स ऐड कर लेते हैं इसमें। बटन, ओके, बटन में टेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, 1। ओके, I don't know what happened, but I pressed 1। हम इन बटन्स को डुप्लिकेट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, let's keep placing them like this। Actually, Control Z, I'll tell you guys a better way जिससे इन सिंक रहेंगे आपके बटन्स। 1, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, अब हम इनको सेट करते हैं ऐसे, 2 and 3। ओके, सो अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट डाउन डाउन, कंट्रोल सी and कंट्रोल वी, and now हम, oops, क्या मसला इसको, ओके, सो इन्हीं को ही पेस्ट करना है like the old way, because the new way is making problems for me। Okay, control C, control V, control C, control V। ओके, इनके नेम्स चेंज करें। अब आप
button 2, 3. Okay, this will be a 5. Everything's messed up. सब कुछ mess up हो गया है मेरे कंट्रोल Z and V's की वजह से, पर you guys आप लोग इसको थोड़ा orderly fashion में करना. Okay, 6. This is a 9. This is 4. मैं वीडियो पॉज करता हूँ इसको फिनिश करके. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 looks good to go, and we don't need this right now, so इसको delete कर देते हैं हम. और की पोजीशन वापस लेके आते हैं. Okay, seriously, a lot of undos, so let's not delete this for now because it's ये इसके साथ associate हुआ है because हम ये constraint layout के साथ पहले था, तो ये आपस में constrained है. So let's just focus on our program right now. Okay, so हम चाहते हैं कि इन बटन से हमें input मिले, और input हमें कहीं पे चाहिए. So उसके लिए हम एक text box बनाएंगे. Text box, yes. Edit text हमें चाहिए, which is plain text. इसको इधर put करेंगे. Okay, और name को मिटा देंगे. Okay, docs. Okay, हमें एक और edit box चाहिए. Yes, because हमारे पास दो numbers के operations हैं. And then that's the text view. हम इसी को duplicate करते हैं. Copy, paste, Control C, Control V. Okay. उसके बाद बाकी के buttons भी add करते हैं. Control C, Control V. ये भी associated है किसी के साथ. Okay. Okay, so okay, Control C, Control V, couple of times. Okay, हमें बस अपने buttons ही चाहिए, तो उनको कहीं से भी copy paste कर लें आप. Just make sure हमारा view ना खराब हो. Okay, इनको set करते हैं 9 के बाद 0. यहाँ पे आएगा multiply. Okay, यहाँ पे हम डालेंगे
divide, यहाँ पे subtract और यहाँ पे add. Okay, we're still missing one, that is equals. So let's put equals over here. यहाँ से बटन उठा लेते हैं और वैसे अगर आप यहाँ से बटन्स उठाते रहें तो you won't have the problem that I'm having, but I was trying to look into the constraints. Anyways, equals. Okay, so हमारी calculator का layout is complete. Now let's go to the logic part. Okay, for the logic हम सोचते हैं कि logic क्या हो सकती है. First of all, हम दो values लेंगे जो इसके अंदर हम enter करेंगे, तो हमने उन values को कहीं पे output भी कराना है. So first of all we need another output area. Okay, so एक output area भी बनाते हैं. Okay, find the edit text, plain text. So हम इधर रखते हैं name की जगह just put a semicolon. Okay, यहाँ पे हमारी आउटपुट आएगी, यहाँ पे आउटपुट आएगी, यहाँ पे हमारी दो इनपुट्स होंगी और इससे ये फंक्शन इन्वोक होगा और इन सब बटन से हमारी इनपुट्स होंगी. ओके, इनकी आईडीज हम चेक करते हैं फिर edit text की. This is edit text 2. Okay, let's name this input 1. Input 1. Let's name this input 2. Input 2. Okay. Input 1, input 2. Okay. Third, we need to call this answer. Naming conventions, again I repeat, don't matter. आप कुछ भी IDs रख सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक. Okay. Let's go to the coding part. So on create is our constructor. तो हम अपने constructor में objects create करेंगे. Let's put an object of edit text type called input 1. And also input 2. Also answer. Okay, ये डिक्लेयर हो गया हमारे पास. उसके बाद हमने इन बटन्स को भी, no actually we don't need the buttons, हम इन पे on click functions यूज करेंगे.
ओके, इनपुट 1 हम अपने इनपुट्स को असाइन करने वाले हैं, is equal to find view by id, because this is a view, हमने किसी id के साथ इसको एसोसिएट करना है, और remember r dot, it's in our id dot input 1, yes, okay, semicolon, ओके, हमने इनकी स्कोप को ग्लोबल रखना है, सो वी हैव टू पुट इट ओवर हियर, रो पेस्ट, ओके, अब ये पर्पल हो गया, दैट मीन्स इट्स वैलिडेटेड। उसके बाद हम इसकी टाइप को भी कास्ट कर लेंगे एज एन एडिट टेक्स्ट, एंड वी आर गुड टू गो। इसी तरह लेट्स कॉपी पेस्ट दिस, input 2 to input 2 and answer to answer. Okay, so all of these are validated, ये तीनों पर्पल हो गए, इसका मतलब they're being used. Okay, next हमने functions बनाने हैं, let's make functions for 1 2 3 4 and 5 6 for all of these buttons. So पहला हमारा फंक्शन क्या करना चाहिए इस फंक्शन को, कि अगर हम इस बटन को या किसी भी बटन को प्रेस करें तो सबसे पहले वो एडिट टेक्स्ट 1 का की चेंज कर दे वैल्यू। ओके, okay, so let's write our function called public void public void set text set1, because this will be for our one button. और हम इसको empty नहीं छोड़ सकते because it's a view, हमने इसके अंदर view के parameters assign करने हैं। Why? Because this is a view, type of a view, and हम इसके on click function को तब तक invoke नहीं कर सकते जब तक वो view type के parameters को accept ना कर सके, क्योंकि this is a view type of parameter on click. So let's go back to our main class. Okay, so हम input 1 को कॉल करेंगे input 1 dot set text to 1. Okay, so इससे हमारी input 1 का text 1 set हो जाएगा, but we're dealing with numbers right now, so हम integers भी declare कर लेते हैं, floats, int, let's name it a1 or I1, just a,
और एक B भी and C. Actually, let's call it input A, input B, and answer C. Okay, so यहाँ पे also we will change input A will be equal to 1. That means हम इस वेरिएबल में भी 1 स्टोर कर देंगे. And also हम एक flag भी set करते हैं. Let's make a flag. Let's call it agenda, which is equal to 0. This is equal to 0. Okay. ये मैं आपको बताऊंगा झंडा क्यों यूज करना है. बिकॉज हमारी लॉजिक ये करती है कि हमने जब भी कोई भी नंबर सेट किया तो वो हर दफ़ा इनपुट 1 पे ही सेट होगा. तो हाउ वुड वी नो कि इनपुट 2 पे भी सेट करना है या कैसे जाना है. तो बेस्ड ऑन दैट फ्लैग जब 1 की इनपुट सेट हो जाएगी हम फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे और देन ऑटोमेटिकली इट विल मूव टू द नेक्स्ट. ओके, सो एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं. इफ झंडा is equal to 0, yes, else झंडा is equal to 0 and यहाँ पे झंडा is equal to 1. ओके, इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे. input 2 and input B. looks good enough. तो इनकी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारा इनिशियली झंडा विल बी 0 जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो दैट मीन्स हमें पहली एडिट टेक्स्ट में वैल्यू चाहिए होगी. जब कोई पर्सन 1 क्लिक करेगा सो 1 विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ दिस प्लेन टेक्स्ट. और अगर किसी ने ऑलरेडी 1 क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी मैं 1 क्लिक करता हूँ तो ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा बिकॉज ऑन 1 लेट्स फाइंड 1 ऑन क्लिक set 1. सो इससे हमारा 1 को क्लिक करने से set 1 इन्वोक हुआ करेगा. सो लेट्स डू अ ड्राई रन. 1 को क्लिक किया तो क्या होगा, इनपुट 1 का टेक्स्ट 1 में बदल जाएगा. इनपुट A इस इंटीजर में 1 स्टोर हो जाएगा और झंडा द वैल्यू ऑफ आवर फ्लैग विल बी चेंज फ्रॉम 0 to 1. दैट मीन्स नाउ आवर फ्लैग इज 1. तो दोबारा कोई अगर 1 दबाएगा या कोई भी नंबर दबाएगा तो फिर इट विल गो फर्स्ट इफ को इग्नोर करके एल्स पे जाएगा. देन इट विल सेट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट इनपुट. इज दैट ऑल क्लियर? आई होप इट इज. सो you guys should test this on your phone for one, and बाकी का जो हम करेंगे फिनिश प्रोग्राम वो होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. so stay tuned for the next lecture so we can complete our calculator program. See you guys for today. Allah Hafiz.